And the time when you went on Shark Tank, that time your age was? 18. And my first failure was after seeing all this, and I understood this by the age of 15. I was like, ये क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? ये एक unfair advantage है कि मैं 15 साल में चालू किया है तो and since then I have started failing in life, not only in academics but. Hi Shreyan, Hi. I've finally gotten the chance to interview you, have a podcast with you regarding your brand. And trust me, I'm waiting for it since the first time I saw your episode on Shark Tank. Obviously, I didn't have the plans to do a podcast with you, but I always wanted to meet you just to get your visions on particular things of how you started your brand at such an early age. You were the youngest pitcher on Shark Tank till today, correct? Yeah. And your age today is? 19. And the time when you went on Shark Tank, that time your age was? 18. Wow. At the age of 18, you went to Shark Tank. And at the age of 18, how old was your brand? 3 years old. 3 years old. So basically, you started your brand when you were at the age of 15. Yeah. What were you thinking at the age of 15? मतलब आज के टाइम पे 15 साल की उम्र के बच्चों को तो उनके पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली अपना बेसिक होमवर्क करने को फोर्स कर रहे होते हैं. Like the kids are so disinterested in, you know, they just want to chill, they just want to play. That is also not wrong. But what were you thinking at the age of 15 कि भाई हम कंपनी स्टार्ट कर देंगे, 3 साल बाद हम शार्क टैंक जाएंगे और फंडिंग भी उठाएंगे at the age of 18? क्या आपका थिंकिंग था? So when I was in 15th, I was in the 10th grade. Right. And 10th grade में board exams का pressure तो चालू ही हो जाता है. ICSE I was in. So 7th grade में मेरे mom ने एक बहुत important line बोल दिया था जो आज तक stick हुआ है. I had got back my report card that day. I had got 73%. C लाया था. Okay. So my mom said कि बेटा या तो तू topper बन या तो तू failure बन. बीच में नहीं चल रहा. या तो A ला या तो F ला, C नहीं चलेगा. And that day I decided that, you know, I have to do something about this. Topper बनना बहुत मुश्किल है. सब कोई topper की रेस में लगे. अपन failure बनते हैं इसमें. And since then I have started failing in life, not only in academics but, you know, I started falling in love with failure. And my first failure was मैंने एक लड़की को propose किया और उसने reject किया. So I mean सबका I guess first failure तो वहाँ से ही चालू. पहला failure ये था. And इतना वो that was my first failure in life. I had never failed before that. Correct. तो जैसे ही वो पहला failure हुआ ना, तब मेरा दिमाग में सेट हो गया कि I have to start thinking outside the box. Yes. ये सेट प्रोसेस है शर्मा जी का बेटा का लाइफ है जो हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं. स्कूल जाओ, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद यू आर रिग्रेटिंग व्हाई डिड आई डू दिस थिंग. So that's when I started getting my interest outside of school, where I started learning how to sell paintings. I learned how to code. Sold my first painting for 9,000 rupees At the age of? at the age of 8. 8? My God, people don't know how to draw or paint at the age of 8 and you were selling paintings. Yeah. Wow, so impressive. मारवाड़ी हो तो और painting jeans बेचना में तो jeans like. So first painting I sold and उसी पैसों से then I bought myself some shoes. एक satisfaction मिल गया 8 साल के बच्चे को कि हाँ यार कुछ खुद के life पैसे में से किया. कमाया है. Wow. फिर 13 के एज में I joined the stock market, where I learned how to research on stocks, learn how to research on companies, the founders. I even invested in a company which gave me 20x returns. Wow. So this experience and this earning that I got from there took me to one step forward, where मैंने खुद एक बैंक चालू किया स्कूल के अंदर, where I was giving loans to my friends at 45% interest. Wow. So कैंटीन में वो लोग मांगते हैं ना. Yes, सही बात है. तो मैं इंटरेस्ट पे लोन देने लग गया. एंड एवर सिंस देन आई हैव ऑलवेज हैड दैट कि यार सीख के मतलब करके सीखने में मजा ज्यादा है. सही बात है. यू नो ये सेम चीज अगर मैं टेक्स्ट बुक से या थियोरेटिकली सीखता, इट हैव बीन वेस्ट ऑफ माय टाइम. मैं मगअप तो कर पाता बट आई वुड नेवर बी एबल टू यूज दैट इन माय लाइफ. Very true. So our education system is not actually wrong. The subjects they teach are also limited but not wrong. But the way they are assessing us is the way we are learning. Right. So if you will assess us on definition, then we will learn the definition. If you will assess us on a specific, you know, ये 4 लाइन पढ़ के आना, ये 4 लाइन को रिपीट करके वापस आंसर देना, तो हम वही 4 लाइन पढ़ के आएंगे. और उससे हम क्या सीख रहे हैं कि हम मेमोराइज करना is the best skill in that a child should have. That is not true at all. That's not true at all. After seeing all this, and I understood this by the age of 15,
I was like, ये क्या सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, what is this, you know, why waste my time, why waste your time? And at the age of 15, just saying this would not make any value. Because at the age of 15, there are so many kids who are questioning what they're being Exactly. taught, but Exactly. they are not being able to leave everything and then start a whole education platform to change. Exactly. What was that transition like? कि नहीं भाई हमको ये तो नहीं करना है. And while we are talking about that, I would also want you to tell our audience what does OLL as a brand do? जो आप Yeah. बता रहे हो कि the problems in the education system, how is OLL changing that or bringing a difference? And what are you trying to do with OLL? Absolutely. So the biggest experience for me in my entire life, the biggest risk that I've ever taken is 15th February 2020. मैंने मेरे घर में सारे जो मेरे belongings थे, slippers, wallet, watch, cycle, सब कुछ लेके घर छोड़ दिया. I was very inspired by Gautam Buddha on how he took a take on his world and he walked out of his kingdom. तो मैं सोचा कि you know, if I want to find that level of nirvana, that guy, he is still known today. You know, he's still prayed to today. He's still a god today. Yes. And he chose the different path. You know, like we have rulers like Aurangzeb, we have rulers like Akbar who fought and then won the land. This guy didn't fight, but he still won people's heart and he's still alive. Of course. So I was so inspired by that point that I took everything and I walked out of home. So I used to stay at Nepean Road. I walked out of home and I started walking till Sea Face. I gave my cycle away and gave my wallet away. So on Sea Face, when I gave my cycle away to this child who was underprivileged, he took the cycle and his t-shirt was torn, green color t-shirt, dark face. He took the cycle and he smiled so wide. उसके टूटे हुए दांत दिख रहे थे and he said, भैया मेरा सपना पूरा हो गया. That was the point in my life where you know things changed from just monetary benefit to a larger vision, a larger value कि I want to enable kids to fulfill their dreams. वो उस सेकंड में इतना रियलाइज नहीं हुआ बट कुछ तो लाइफ में चेंज हो गया था. Then I was found 15 kilometers away from home by the police. My parents were finding me everywhere. Oh, they had no idea that you They had no were- idea. Okay. Nobody had any idea. Oh, that is risky. Yeah. I was on the path. अगर वो पुलिस नहीं ढूंढता तो मैं आज शायद मर जाता. I don't know. But that police found me. They brought me back home. That तो पिटी जरूर. लाफा वाफा भी पिटा. But my dad said कि अगर तू ये कर सकता है तो लाइफ में कुछ भी कर कुछ भी कर सकते हैं. इतना courage होना भी बहुत बड़ी बात है. So that was 15th February 2020. 4th April 2020, we launched OLL. And when we launched OLL, it was with the whole and soul belief कि हमें बच्चों को इतना capable करना है कि वो अपने सपने खुद से पूरे करें. Where they can start earning on their own, where they can start using skills of their own, where they can start doing that for, you know, Monetary not just monetary, to fulfill their dreams. Fulfill their That's the whole Fair. ठीक है. So that was the whole mindset. And we started teaching. Lockdown चालू हो गया था 23rd March को 2020 में. So it was all online live classes. So having a little bit experience from my parents' side, a little bit of network, we shared that on our wall. एक Canva पे poster बनाया, free Canva class, free coding class, free designing class. Poster बनाए, Zoom का link बनाया, सबको WhatsApp पे share किया. And that's how OLL started. और आपको फर्स्ट टाइम में कितना रीच मिला होगा अप्रॉक्स? Maybe 100-200 लोग आए थे. और आज एक एवरेज प्लेटफॉर्म यूजर कितना है? Today there is around 25,000 daily learners. डेली लर्नर्स. Yeah. वाओ, व्हाट अ जर्नी इट हैज. So that was in the 10th grade I had started and slowly हम लोग free में चालू किया था. मतलब we didn't charge anything, no paid, no monetization. 2 महीना free में चलाया. We had hired 5 to 10 interns at 3,000 rupees a month from internship. काम करो, पैसा लो 3,000 रुपये. They were also willing to do lockdown for etc. इसमें we started reaching a reach but पैसा नहीं कमा. And me being Marwadi again, stressing on that point, sustainability comes through profitability. फॉर श्योर. So we weren't able to sustain that growth. And that's why we started charging for these classes. जैसे ही charge करना शुरू किया,
कोई नहीं है. Of course. Because obviously however good the class is, that एक level of Indians को पैसा भराने के लिए you have to provide something out of the box. तभी वो provide something out. yes तभी वो लोग पैसा भरने के लिए willing होंगे. Indians Absolutely. love their money. Like they will not spend it unnecessarily. Yeah. So that's when we understood कि एक B2C is just not hitting right. Okay. जितना भी मैं marketing करूँ, it's not clicking. मेरा CAC is not equal to my What you or revenue. Correct. So we stopped that cycle that day itself. Okay. कि हम अब इस तरीके से नहीं जाएंगे. हम इन यही ऑडियंस को पहुंचना है, माँ बाप को ही पहुंचना है. Because ultimately customer is a parent, user is a child. Yeah, of course. So the parent के यहाँ से पैसा निकलने वाला है. So माँ बाप need trust कि किससे आ रहा है. And that's when we started going through schools. So we partnered with schools. Initially एक school से चालू किया, फिर 2 schools, फिर 5 schools, 10 schools, and within the first financial year we clocked in a revenue of 1.34 crores Wow. and a net profit of 28 lakhs. Wow. Again, guys, I don't want to keep repeating this, but all this was done at the age of 18. No, this was 15. 15. Oh my bad. At the age of 15, that makes it even better or worse, I don't know. But at the age of 15, he clocked a revenue of 1.3 CR with a profit of 28 lakh rupees at the age of 15. Incredible, incredible. Yeah, tell me more. Please continue. So yeah, I mean that's been our initial start. Correct. So, okay. तो आपने अभी जैसे बताया कि अपना जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम्स जो है वो लोग बहुत ज़्यादा थियरी पे फोकस करते हैं. करेक्ट. व्हाट यू आल्सो डोंट लाइक एंड व्हाट यू आल्सो डोंट सपोर्ट. Correct. हाउ इज OLL ब्रिंगिंग अ डिफरेंस इन दैट कि आज वो भी तो ऑनलाइन क्लासेस ही हो रहे हैं बट वो क्यों थियरी बेस्ड नहीं है, वो क्यों ज़्यादा प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन बेस्ड है, कैसे? It starts with the assessment. ओके. So when मतलब अगर अपन बच्चे को end outcome दिखाए कि आपको 9 out of 10 मिलने वाला है अगर आप ये आंसर्स कर लोगे तो बच्चा वो सीखने में फोकस करेगा. हमारा असेसमेंट ऐसा है 3 लेवल का है कि फर्स्ट असेसमेंट इज इंस्ट्रक्शन बेस्ड. सो वी गिव देम अ प्रोजेक्ट टू मेक, वी गाइड देम इंस्ट्रक्शन कि ये ऐसे होता है, ऐसे करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5. ओके. सो पहले लेवल में वी हैंड होल्ड देम व्हेन वी बिल्ड देयर इंस्ट्रक्शन because they are also new to the topic, new to the subject, so we have to handle. Second level is where we give them case studies of problems. So ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए या तो एक वेबसाइट बना के दिखाओ या फिर इसके लिए एक रोबोट बना के दिखाओ, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो ये एप्पल का केस स्टडी है तो इसके लिए आप सोल्यूशन क्या करोगे. अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपके फंक्शन में ये बात करनी है तो आप क्या कैसे बात करोगे. एंड सो दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल असेसमेंट. ओके. And the third level of assessment is creativity, where we leave it up to the person कि आप अपने हिसाब से आपको जो बनाना है बनाओ, जो बोलना है बोलो, जैसे करना है करो, वैसे करो, but it should come through you. Makes sense. So when we do these 3 levels of assessment in our courses, all of them are developed for these 3 levels of training. So that is when we change our students mindset and they never want to go back to theory learning. मतलब मुझसे अभी भी आप अगर कोई टीचर बड़े से बड़े प्रिंसिपल के सामने बैठा, वो अगर मुझे बोर्ड पे थियोरेटिकली पढ़ा रही है, मैं उसके सामने सो जाऊँ बिकॉज मुझसे बैठता ही नहीं दिमाग में. I understand. सीखा Yes. वो मेरा time waste. yes, जब आप प्रैक्टिकल लर्निंग करते हो, एप्लीकेशन लर्निंग करते हो, आपको इंस्टेंटली जो भी आप सीख रहे हो उसको आपको अप्लाई करने को भी मिल जाता है. तो आपका वो Exactly. कनेक्शन टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, इट लाइक वर्क्स डिफरेंटली एंड आई अंडरस्टैंड लाइक एंड यस दैट The मेक्स whole concept is why are people learning? To use it in their lives. वरना फिर सीखो ही क्यों? दिमाग में डाल के स्टोरेज बनाना है तो फिर उसके लिए जीबी है आपके पास कंप्यूटर पे. So the entire point of learning is to utilize that learning in real life. So that's how we got this team. हमें practical learning enable करना है. And this was one level, and today we also have a platform for them to showcase their creativity. जो creativity assessment होता है last level, that has a level of showcasing. Okay. So where they showcase it. So when we are teaching entrepreneurship, we have a TV show on CNBC where kids come and pitch their business ideas to real investors. Wow. So they can convert that, just that idea, just that course into an actual business where they start converting that. And for the kids we teach in technology, we have a tech fest which we hold in IIT Bombay. So there the kids come and showcase their projects
And then we have people who come there and actually invest in those kids to convert that into reality. Wow. You're actually giving those kids also a platform to, you know, actually get something out of the learning that we have only provided. But उसके आगे भी क्या कर सकते हो? You're giving them a chance to get that exposure as well. And what are the kids का age range we are talking about? So today we are teaching from first grade to 12th grade. And across Bombay mein we have a market share of around 80% in ICSE schools. Wow, that's massive. कोई भी आप ICSE school पकड़ोगे, you go in, you walk in, OLS courses are. So ये courses curriculum के साथ ही होता है कि Curriculum के साथ टाइम टेबल के अंदर and physical. Wow. Offline. Majority of our places works offline. Okay, so in school, In school. their curriculum, their timetable के within they fit OLL also as a Yeah. part of their curriculum. तो यार एक बात मेरे को बताओ, आपको प्रॉब्लम है एजुकेशनल सिस्टम के साथ, ठीक है? आपने बेसिकली आप उनके पास गए, आपने उनको बोला कि ये सारी आपकी गलतियां है, ये लो मैं इनको ठीक करके दे रहा हूँ. What was their take on it? कि 15 साल का बच्चा आके मेरे को बोल रहा है कि मेरे कॉलेज मेरे स्कूल में इतनी सारी गलतियां और वो आके ठीक करके जाएगा. लेकिन कैसे आपने वो फेस किया? नहीं, we don't tell them directly. मतलब मुंह पे नहीं बोलते. Of course. Obviously, मुंह पे बोलेंगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा. तो we have to obviously go and show them the outcomes, show them the एक added value ना स्कूल के लिए क्या marketing होता है कि उनके लिए admissions as a key number, right? For any company, any person is a key number that they're always tracking. For us, it is renewals and referrals that we're tracking. For other companies, it is revenue that we're tracking. जो भी एक key number है स्कूल पर. Most schools का key number admissions होता है, okay? And admissions का growth कब होता है? बस सारे schools में infrastructure तो same है. Almost मतलब समझो ऊपर नीचे पीछे से उसका फर्क है बस, ठीक है? फिर सारे schools में same subjects से सिखाया रहा है. Math, Science, English, Hindi, History, Geography. Basic dance, art, languages से सिखाया रहा है. We are providing them an option where they can choose from over 1000 subjects. Limitations तो सिर्फ इतने होते हैं स्कूल के पास. हम 1000 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दे रहे हैं स्कूल को. दे सिलेक्ट फॉर द किड्स, ये 3 सब्जेक्ट मुझे देना, ये 2 सब्जेक्ट मुझे देना, ये 4 सब्जेक्ट देना. सो दे सिलेक्ट इट एंड दे ऐड सो एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन हो गया एंड एक हमारे सर्टिफिकेशन का यूनेस्को एंड स्टेम एज आर सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया. So there we are providing that certification to the school and the children. Okay. So what happens is एक और एडिशनल ट्रस्ट फैक्टर आ सही गया. बात. हाँ, ये सही जगह से कंटेंट आ रहा है, करिकुलम आ रहा है एंड हमारे टीचर्स जाके फिजिकली सिखाते हैं. सो स्कूल सेव मनी, प्रोवाइड क्वालिटी एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज एडमिशंस. तो उनके लिए वो एडमिशंस दिखाना पड़ता है, वो मार्केटिंग एस्पेक्ट दिखाना कि मेरा स्कूल में पहली बार एआई सिखा रहा है. बॉम्बे में पहला स्कूल है जो एआई एज अ टाइम टेबल में सब्जेक्ट सिखा रहा है. तो वो उनके लिए एडमिशंस ग्रो. एंड इफ यू डोंट हैव इट, why Bombay is our biggest market? Okay, is because now that we have captured एक network effect हो गया, so that you know if they don't have it, the schools are missing out. सही है. पहले आपने पुश किया, अब आपने वो पुल इफेक्ट क्रिएट कर दिया जब अब बाकी स्कूल्स आउटसाइड बॉम्बे आल्सो वुड वांट Yeah. these curriculums a part of Because their now schools these also. schools refer to every other school, and इतना strong referral है ना. We had a case, I have a screenshot, you know, where a principal asked for anybody who can provide this skill ka training, X skill ka training, and every like we had 10 principals share our contact number. Can you believe it? So Feels एक great, ग्रुप पे शेयर हो गया ना, बस complete गेम जीत गया. Of course. You know, and then that's why we understood Bombay is we have captured it. Now we are in 35 cities with franchisees who are doing the same replication. Initial 3 साल वो push लगता है, but 3 साल के बाद you set up a network effect where there is nobody who comes over. And it's kind of an autopilot after that. Yeah, now it's autopilot for Bombay. Like we don't have to even look into it except for service. Our service, quality of training, quality of education, practical what we promise, what we believe in. अगर वो नहीं pitch हो तो फिर क्या है? सही बात है. बट यही जो बात है कि आप लोग के जितने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, मेरे को एक बात बताओ, फ्रेंचाइज करने से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे, या मे बी हाउ डू यू मेक श्योर कि दैट इज एक्चुअली व्हाट इज गेटिंग डिलीवर्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू. यू नो, फ्रेंचाइज के साथ क्वालिटी कंट्रोल कोई भी फील्ड में, सर्विस फील्ड हो या प्रोडक्ट फील्ड हो, फ्रेंचाइज के साथ थोड़ा इधर उधर इश्यूज तो आ ही जाता है. So the franchisee only handles the sales part. ओके.
The delivery is still up to us. तो बाकी सब स्टैंडर्डाइजेशन पे ही है. बाकी सब standard. Because what happens at school is more about relationships. इधर बॉम्बे में जिसके पास ज़्यादा relationships है, कोई और नया product. Today, if you were to pitch anything to a school, nobody will entertain it. You can't reach the principal only. आप कैसे पहुँचोगे? अगर आपके पास उनका contact number ही नहीं है, कैसे पहुँचोगे? You can't just go to the school, wait on the watchman. Nothing. Yeah, that won't work out. That's true. How do you reach a school? Okay, that is the biggest moat we have created. Now nobody can enter that moat. So वो एक path of entry भी blockage है. Okay. And that moat is relationships. How you talk to the principal, how you maintain a friendly relationship with them, that is the key. And ये same चीज़ हम अकेले खुद नहीं कर सकते बॉम्बे में जैसा कि हर जगह नहीं कर सकते. So that way we have set up teachers, ex-teachers, ex-principals as our franchisee owners. And They're their not just- basic job is acquisition. Their basic job is relationship Okay. management. Yeah. And acquisition is obviously the key job. But relationship maintenance is the key job. Very nice. Very smart. I feel. And we don't hire them. They in fact pay an entry fees to come into the system. वो So और ज़्यादा push effect करे, और ज़्यादा pull effect create कर दिया. So the whole Very thing nice. is, where we, if you hire a sales agent, 3 महीने आपका sales month है, March, April, June, July. Okay, Feb, March, April, June. ठीक है? So उसके बाद आप उनको क्या ऐसे घास पे why are you feeding them from a So that's why we don't hire salespeople at all. We have only one sales head, one CBO, and that's it. We don't have any salespeople. Like how Byju's have like so many sales agents, we have only 2 people. The rest of them all are relationship managers. Interesting. And talking about Byju's, it just got me back to the Shark Tank episode where you said that you have a vision to buy Byju's at some point in life. Yeah. How do you think you can make that possible? I'm not even doubting it. I think you can 100% make it happen. But what do you think is your path to make it happen? Like, हाँ मैं ये करूँगा तो maybe शायद मैं वो चीज़ कर पाऊँ. Like, what do you think is your go-to strategy? Last pre-money valuation of Byju's is $25 million, which is 300 crores. And post-money valuation was $225 million. Okay, which is around 3,000 crores. So this was more of a strategy for him to gain control back of the company because he himself bought stake in the company. So it was more like a move, a Strategic move. Okay. chess का move था. ठीक है. So currently the company is in $1 billion debt, $1.2 billion debt. मतलब 10,000 करोड़ का डेट है कि और वो ईयर ऑन ईयर उसका परसेंटेज देना पड़ता है. सो दे आर अनेबल टू डू दैट. ओके, ओवर दैट दे आर अर्निंग रेवेन्यूज अराउंड 4,000 crores अप्रॉक्सीमेटली. जितना डेट है उसका 1/3. ठीक है. सो इफ यू आर लुकिंग एट मैथमेटिकली इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू बाय Byju's logically. Yes. बट अब मैंने बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा. So that is one thing that I always want. So मतलब आप समझो $1.2 billion plus $200 million plus XYZ, $3 billion चाहिए रहेंगे to buy Byju's. ठीक है. पहले 22 billion चाहिए रहता था. Now 3 billion में भी बिक जाएगा if someone is willing to buy, take a bet. Okay. So if we take a bet of $3 billion, currently our revenues this financial year we're closing at around 8 crores. That is nothing comparison But to still, 3 billion. compared to that, it's nothing. But 8 Yeah. crores revenue in a year, it's a very big thing. Like, you should be proud of that. I mean, start है यार. इससे अगले साल और better होएगा. But 8 crores revenue is no joke. Yeah. Come on. So $3 billion तक पहुंचने के लिए एक level of ये तो एक market share acquisition तो हो ही गया है. इसको vertical expansion करनी है. स्कूल वाला जो business है B2B वो vertically expand करना है. Simultaneously we have to do government orders and international government orders. So because a lot of the money of skill development goes into government and international governments. So we cracked our first international government order in January, where we completed the entire cycle, we generated the revenue and closed. Very nice. So same way now we have to replicate that for more and more countries, and we have to do it for our states of India.
तो वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स करने हैं जिससे we cover up say example 10% of that revenue and obviously हमारा B2B business will grow say around 100x by next 3 years एक X amount of B2C डालना ही पड़ेगा because the limitations of B2B are 4 months 5 months उसके बाद मेरा पूरा गेम B2C पे चलने वाला है so we are introducing something really revolutionary in B2C वो अभी तक we not announced it but that's something that you know we're betting our B2C But what I feel is कि आप because आपने B2B जर्नी पहले लिया तो उसमें आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है it's almost near to हाँ because firstly तो schools are paying you आपके बच्चों को सिखाने के लिए राइट तो वहाँ पे आपको आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो लग नहीं रहा उल्टा यू आर गेटिंग पेड फॉर इट correct वही बच्चे अगर कन्वर्ट हो रहे हैं B2C में आफ्टर स्कूल आवर्स और यू नो प्रोबेबली उनके कोर्स में तो 3 ही Absolutely. सब्जेक्ट्स था मेरे को 5 और सब्जेक्ट सीखने हैं जो उनके Absolutely. प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो वो तो आपका कॉस्ट वहाँ पे भी कैप का तो कॉस्ट आपका लग ही नहीं रहा सो आई फील कि B2C भी आप क्रैक डाउन बहुत इजीली कर पाओगे एंड इट इज अ वेरी स्मार्ट मूव Yeah. पहले B2B कर लिया फिर B2C ले जाओ नो कैप ओनली Correct. वेरी स्मार्ट मूव and we have a 0 rupees budget for digital marketing no performance marketing no paid digital marketing at all no performance marketing हम strongly against मतलब फेसबुक और गूगल को ऐड का पैसा देने में क्या फायदा एंड जीरो ROI like I have done this like in 2020 we tried 2021 we tried बहुत पैसा डाला waste of money at least for my set of business करेक्ट बट जैसे आज तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बेसिस पे ही लाइक पूरे के पूरे डिपेंडेंट है लाइक जिस दिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग बंद हुआ उस दिन वो बिजनेस बंद हो जाएगा so that's something Not- I yes. completely disagree आपका कंपनी जो की मेट्रिक है okay for me at least is renewal and referral as long as these two things work we had a 95% renewal last year 95% that's record breaking in education for sure 95% is it's not like कोई नहीं लाता है और कोई ला सकता भी नहीं है लाइक 95% के बाद हाउ डू यू ब्रेक दैट रिकॉर्ड यू कांट ब्रेक दैट रिकॉर्ड Sir, 5% was we left the customers because of lack of payments, time पे payment नहीं पहुंचा ये वो. So वो एक level of इतना अच्छा quality delivery and इतना अच्छा service देना, that is something that we have achieved. So we track these two numbers on priority मेरे दिमाग में बस ये दो numbers ही चलते. Revenue चाहे increase नहीं हुआ नहीं चलेगा. Renewal referral increase होना चाहिए. So these two numbers when they are key priority now, that means your product is good, your service is good, people are happy, and that's all that matters. For sure. Once your problem is you're solving a problem, that means यू डूइंग अ गुड जॉब एट व्हाटएवर यू डू फॉर श्योर तो आप मेरे को बताओ बायजूस तो एक हो गया अपग्रेड इज आल्सो योर कॉम्पिटिटर anybody who's targeting my customers Yes, is your competitor. is my competitor. But आप समझो it's like a race. whoever does it better wins Like a race example, जैसे just visualize a 400 meter track. ओके ठीक है वो पूरा सर्कल जो होता है ब्राउन कलर का ट्रैक होता Yes, है yes. वाइट पटरियाँ होते हैं ठीक है एंड इट्स अ नेवर एंडिंग रेस ओके जो आके जल्दी भाग दिए ठीक है वो आगे जाके थोड़ा थक जाएगा जो आके कंसिस्टेंटली भाग रहे हैं वो आगे जाके चलते जा रहे ठीक है एंड इट डजंट एंड इट्स अबाउट हु सर्वाइव्स टिल द फिनिश एंड हु कीप सर्वाइविंग कीप सर्वाइविंग एंड दैट्स द गोल बिकॉज़ देयर इज नो एंड तो है ही नहीं कि बस मेरे को इधर पहुंचना है और उसके बाद रुकना है नहीं एंड तो है ही नहीं मेरे लिए 100 करोड़ डेली लर्नर्स इज द एंड बट दैट्स फॉर मी एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी इन द कंपनी इज focused on 100 crore daily active learners. To me, 25,000 is nothing. So that's where we want to go. But उसके आगे भी एक विजन है एक रिलीजन बनाना है जैसे लोग हिंदुइज्म के लिए प्रे करते हैं गॉड्स होते हैं जैसे इस्लाम इज देयर वैसे एक रिलीजन फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग वेयर पीपल आर यू नो जस्ट गोइंग देयर टू लर्न लाइक एक स्टेडियम होता है एक स्टेडियम है जहाँ पे एक अंदर जा रहे हो ठीक है अलग अलग टाइप के क्लासेस चल रहे हैं अलग अलग चीज़ें के जो आपको एंटर करना है वो आप कर सकते हैं यू कैन एंटर maybe candy floss making the class have you ever been to Kidzania yeah Kidzania something like Kidzania yeah something like Kidzania largest
it's not just limited to the rich kids who have the possibility to go to the location for one day. Not just one day. I want to change the entire education. कि मैं रोज ऐसे सीखूं कि यार बस मजा आ रहा है, सीखने में भी मजा आ सीखने रहा है. में मजा आ रहा है और ये चीज सीखना जो डेली सीख जो यूज होता है. Wow, very nice. I'm like really moved with what you said. So that Very kind of nice. religion, जैसे एक मंदिर होता है ना वैसे एक ओएलएन का इंस्टीट्यूट है. लोग ऐसे आएंगे कि हाँ और वो लोग बहुत रेयर होता है कि लोग जाना नहीं चाहते कुछ Yeah, सीखने. लोग यूजुअली इट्स पुश्ड कि भाई जाओ सीखो, Absolutely. जाओ सीखो. यू आर ट्राइंग टू चेंज दैट कि भाई मैं whoever in whatever age comes and says कि भाई मेरे को ये सीखना है, कैसे सीखूं, like how can I get this. Wow, very nice. Okay, speaking about your competitors, product quality, service, वो सब तो आप लोग का like अच्छा है की है, fair enough. But other than that also, why do you think that you are running a more profitable and a successful business than your competitors and they are not being able to crack what you have cracked? So I personally feel like ये थोड़े unfair advantages है. एक है मैं मारवाड़ी हूँ. दूसरा है कि मतलब मारवाड़ी हूँ तो उसके साथ by default मैं बहुत कंजूस हूँ सच्ची. मतलब मुझसे पैसा निकलता ही नहीं है पॉकेट से. अगर आप मुझसे कुछ मैं मेरे दोस्तों के साथ if you ask my friends if I take them out for dinner so I'll make them pay for me. How much ever rich I will become, ठीक है, मतलब monetarily rich, I'll never be like मुझसे वो होता ही नहीं है. और मेरे मतलब पॉकेट में यूजुअली देयर इज जीरो कैश. आई एम लाइक अच्छा बाद में कर देना ये वो ऐसे करके आई गेट आउट ऑफ द. सो आई एम ऑलवेज दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई नेवर स्पेंड मनी एंड बाय दैट आई आल्सो डिफाइन मतलब मेरे पास 7 क्लोथ्स है घर पे, 7 टी-शर्ट्स. ओके, all 7 are OLL. Okay, and all 7 there's 3 gray and 4 black. Okay, 3 gray is for the suit के नीचे वाला and 4 black is daily use. So this level of this thing and ये blue अब जितने भी मेरे posts देखो, जितने भी मेरे stories देखो, एक ही ये है बस इतना ही है. ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास बस इतने ही कपड़े हैं और मैं यही हर रोज धो के ये reuse करता हूँ. So I don't spend money at all. Our employee cost is around 3 lakhs per month, even running at a scale like this level. Our teachers' cost is higher because we pay our teachers well, so that they retain with us, they teach well. Of course. And even our basic variable like our IT spend is around 75,000 to 80,000 per month maximum. So that level of efficiency in cost we have, and no marketing. So by default, सब वो तो cost है. Second is my age. So ये एक unfair advantage है कि मैं 15 साल में चालू किया ना, तो एक सामने वाले का perception भी ये है कि इसको support करना ज़्यादा है. So our investors came in early because they saw lot of investors rejected me because of my age, but the ones who accepted me because of my age, they support me so well, that they present my age as an advantage instead of a Correct. negative point. Yeah, fair. It's about perspective. It's about Yes, perspective. yes. जैसे ये मैंने 200 लोग को ये सेम पिच किया, nobody believed me because I was age 16. Same I pitched to one person, they believed me and when they pitched for me and they pitched me so well, that's when they changed my perspective. They generated investors for us. So my age has played a very big role. I have gotten free marketing because of that so much. मतलब बिना पैसे दिए इतना marketing मिलता है, तो क्यों नहीं? And I don't like to spend money at all. That's Same. my whole thing. So, but you think the key differentiator where you are winning is that they are spending much more money Yeah. and you On are things not. which don't matter. Okay. I spend money on things which matter, Matter. like my teachers, Correct. like my kit, my product quality. That's what matters to me. So I spend money on those 2 things only. Apart from that, whatever doesn't matter, why spend money? सही बात है. Just for brand building ये सब चीज का तो sense नहीं है. जितना भी brand building है सब free में. Very nice. Something to learn definitely. But yeah, ये जो age वाला factor है, I'm very happy कि that one person saw the good about that age Yeah. thing, and it should be like that also. But again, the society is such, the people around us are such. At the age of 15-16, when you are actually presenting the idea, क्या रिएक्शन आपको, मतलब आई नो कितना नेगेटिविटी सुनने को आया रहेगा यार. सब लोग यूजुअली, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नो, बट अगर होता मुझे तो लोग ऐसे बोलते क्या 15 साल की उम्र में तू ये सब सोच रहा है भाई, जा कॉलेज जा, अपना स्कूल खत्म कर, फिर सोचेंगे, लाइक ये सब मेरे को बोलते हैं. क्या वो लोग ने क्या क्या आपको बोला एंड हाउ डिड इट प्ले पैसा कमा? We had revenue to show. We had profit to show.
I didn't speak my numbers book. Once I had those numbers, those key numbers to show them, उसके बाद there is no question. there is no question. मतलब अगर मैं जितना भी कॉलेज जाऊँ, जितना भी नंबर 1 मार्क्स लाऊँ, मेरा पहला जो नौकरी मिलने वाला है वो मुझे 1 करोड़ साल पे नहीं मिलने वाला है. Barely 1 or 2 people get it. Okay, and net profit of 30 lakhs. So पहले साल में जब वो एक फिगर दिख गया ना सबको, that's how I convinced them to help me drop out of school. Okay, and obviously you have to sustain that figure and continue that figure. Yeah, of course. You'll have to sustain. Yeah, वरना फिर same question वापस आएगा, स्कूल जा वापस, कॉलेज जा, ये वो कर. So you have to have that level of, you know, numbers will speak for you. You don't speak for yourself. It's, you know, मतलब I don't go and tell them कि हाँ मुझ पे भरोसा करो, मैं कर दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, ये वो कुछ नहीं होता. कर दिया. ये मेरा बैलेंस शीट है और मुझे इससे और आगे लेके जाना. आप ज्वाइन करें. इनफैक्ट द पीपल हु फर्स्ट वर सो अगेंस्ट मी ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, व्हेन वी ओपनड आवर फर्स्ट इन्वेस्टर राउंड, okay, open for the public, that time they invested the most. My nanu and my nani, they were against me so much. They invested 10 lakhs. We raised the angel round by 3-5 lakhs per person we were raising. Friends and family. No. Angel. Only 2 people were friends and family. Rest everybody Okay. was extra. So एकदम वो लेवल का कि हाँ भाई ये दोनों लोग ने अगर इन्वेस्ट कर दिया बस. हाँ, चेंज दिख रहा है. वो Change. थिंकिंग में चेंज दिख रहा है. बट यार चलो स्कूल ड्रॉप करने तक तो आपने रेवेन्यू जनरेट कर दिया था कि उसके बाद आपने ऑनलाइन चालू की. नहीं, I generated revenue while I was in school. Yeah. So how are you managing both together? I wasn't. अच्छा, स्कूल पे इंटरेस्ट नहीं था. बेसिक फोकस और कि इसको क्रैक कर लो, अगर ये क्रैक हो गया तो ये तो छोड़ना ही है. ऐसे. Luckily 10th grade में COVID was there, so board exams मतलब got free pass. सही बात है. So like basically मतलब वो क्या बोलते हैं, I got 88% without study. वरना मैं 30% के below guarantee मतलब I have a YouTube video on my channel where I'm unboxing my pre-prelim marks. So लोग phone unbox करते हैं, ऐसे तो मैं marks unbox कर रहा था. और I had got 35 on 80, 25 on 80, 18 on 80, like guarantee fail on that. Luckily COVID की वजह से pass हो गई, वरना तो failure है. ठीक है, मतलब it's a हाँ. part and parcel of life. Part and Failure is parcel. also fine. It's totally okay. But पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब स्कूल छोड़ने का आपने बोला कि भाई They were very supportive. that's lucky. I would say like most parents would not understand only the idea of dropping school. कि बाकी और सारा आइडियाज को ड्रॉप कर दो, how can you drop school? Correct. That is the first idea in any parent's mind, and probably any, like, you can't doubt that, you can't question that also. Like the parents Yeah. want the best for their kids, not knowing कि स्कूल में क्या हो रहा है actually और क्या better हो सकता है. Leaving all that aside, they want the best for their kids, knowing going to school is actually important. Dropping out of school is not an option at all. ये सारे मतलब society issues तो आया ही होगा. I'm So sure. what I believe is parents are our biggest investor. They have invested you till date for the school fees. अभी आपकी कॉलेज फीस तक अभी वही पैसा दे, घर पे ठहराया, समझो रेंट भी दे रहा. Then you have also bought you clothes, they bought you t-shirt, they bought you पैंट, चड्डी, सब कुछ आपके लिए किया, आपका हेयर कट, आपका नाला धोना, आपको सब कुछ लेकर आते हैं बिगेस्ट इन्वेस्टर्स. आप खुद के नहीं हो, 50% से आपकी माँ का, 50% से आपकी बाप का. सही बात है. Right? And this mindset makes me the most powerful person because I have to convince my board members, my shareholders, okay, for dropping out. So instead of taking that as a negative point, today's parents are mainly like of my age के बच्चे जो जितने भी है, even your age, they are more understandable and open. Correct. Yes, definitely. Obviously not dropping out, but अगर आप उनको एक convince कर लो कि startup करना है, There is a chance startup of करने के understanding. बाद जब revenue आ जाएगा, जब पैसा आ जाएगा, then if you ask them to drop out, yes, definitely they will. Yeah, there is definitely more understanding and more chances of things happening a certain way जो a couple of years ago नहीं हो पाता. Absolutely. And this luckily मतलब I had to convince my parents first. Of course, of And that is the biggest thing. Once you convince your parents, पूरी दुनिया outside. But if you don't convince your parents, then your biggest shareholders don't believe in you. Then what's the point? सही बात है. Very
So if that's the whole thing, so you should convince your parents first before starting any business idea, before starting anything. Parents are the biggest shareholders. वो दिमाग आप सोच लो कि मेरा परसेंटेज है ही नहीं मुझको, 50 इज माँ का, 50 इज बाप का, उनको इस पूरा क्रेडिट भी उनको ही जाता है. सही बात है. For everything. बनना भी चाहिए उनको. Very nice. Very nice. And us growing up in Marwadi families, we have been taught to respect our parents. We've been Of course. taught to, you know, respect the elders. सबको जय श्री कृष्णा करते, प्रणाम करते, Yes. सबका आशीर्वाद देते. So this culture of India is what will change India's future. It's not going to be कि हाँ 18 के बाद मुझे घर छोड़ना है. If I'm seeing parents of parent join the internship, ये सब for Western culture is personally not so successful. Obviously, there are people who are richer than all of countries also in West. To each its own वाला बात होता है, but यहाँ पे humble रहना ज़्यादा सिखाते हैं. Absolutely. Like stay grounded ज़्यादा सिखाते हैं. Like बड़े के सामने आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, but अगर एज में कोई आपसे बड़ा है तो आप उसके सामने छोटे ही रहोगे. Yeah. Like you know how पढ़ना हाँ, मतलब बस ये सब ये सब ये थोड़े इंडियन वैल्यूज है जो खाली मारवाड़ी नहीं हर इसमें ही every single yes culture. काफी डाइवर्सिफाइड है, but yes these qualities are the change, like are the differentiators It's what also. we have to, you know, key focus on. We Your shouldn't forget parents this. are very smart. You know, we think that parents are stupid. No, I mean we are a We part think of we are them. smarter than We are a part yeah. of them. Exactly. We are just a part of them. Like I always believe कि मेरे डैड के जो क्वालिटीज है और मेरे मॉम के जो क्वालिटीज है वो दोनों को मिक्स करके तो मैं उनमें से थोड़े बहुत क्वालिटीज है अभी तक मेरे में. अब उसको ग्रो करते करते like to make it Absolutely. better, to enhance it, that's on me. But I am just a part of my dad and a part of my mom. That's how every child of our age should think. also. But you know, the entire thing is Western mentality. हाँ भाई 18 साल के बाद let's do it on our own. It's hard. People say that nepotism is there if you take over a family business or you continue a family. There is नहीं होता है ना कि हाँ अगर अंबानी का बेटा वापस रिलायंस में जा रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास तो पहले सब कुछ सिल्वर प्लेट में था. But what's wrong in that? तो What's wrong अंबानी in का बेटा growing? इतना बड़ा बिजनेस को छोड़ेगा भी थोड़ी ना. Exactly. Like, कौन संभालेगा अंबानी के बाद वो legacy brands? How do they work? There is no nepotism in it. If you can do it well, do it. If you can't do it well, then don't do it. Exactly. Just because I have to do it, don't do it. If you can do it well, then do a good job at it. Like, Absolutely. I And mean, grow I- it to another level. Like your Yes. parents have spent their entire life to build a business, build a brand, build a name in the market. Take that and grow it to another level. Yes, बिल्कुल. That is not nepotism, I feel. See, Yeah. Bollywood में भी देखो, I don't want to take positive or negative names, but then there are some actor kids who have built a name for themselves because of the qualities they showcase on screen. Absolutely. Correct? But then again, there are some kids जिनको एक दो फिल्म मिल चुकी है because of their relations, and then they're not able to get more films. That is again, there is no nepotism in it. Some guys could do a better job Correct, because of a connection. Some people could not do a better job, and then they should leave it also. They shouldn't keep sticking at it कि नहीं एक और फिल्म में better हो जाएगा, एक और फिल्म में better हो जाएगा. No, maybe you are not meant for that. Absolutely. Then that is a part of. Sanjay Dutt would never be where he is today. But 100% you should build that legacy for yourself, but above your parents' legacy. You should Correct. not leave that Yes. parents. Separate नहीं हो जाना चाहिए. हाँ, अगर किसी के पास इतना rich legacy नहीं है parents का, then you have the choice to, you know, मैं खुद से अपने आप से कुछ करूँ. But अगर है तो फिर why redo the wheel? सही बात है. And even if you want to redo the wheel, I don't think so there is anything wrong in that. Okay? Because see खाली मेरी होता है ना difference of opinions और difference of interest भी होता है. जैसे my dad, he runs a medical. We do wholesale also, we do retail also. It's a 24/7 medical right in front of a government hospital also. So you know, Correct. the sales are stable, the business is stable, everything is good to go. Yeah. I tried. मैं ऐसे नहीं बोलता कि मेरे को कभी भी इंटरेस्ट था ही नहीं. मैंने ट्राई किया वो बिजनेस भी ज्वाइन करने का. 1-1.5 महीना में था उस बिजनेस में, या प्रोबेबली लॉन्गर आल्सो, बट वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था अंदर से कि यू नो कि हाँ मैं मे बी इसमें ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको इस वे से कर सकता हूँ, मैं इसको उस वे से कर सकता हूँ, यू नो आई कैन एक्चुअली प्रोवाइड वैल्यू. वो कभी आ ही नहीं रहा था मेरे अंदर से. सो आई टोल्ड माय डैड कि पापा सी आई ट्राइड, इट्स नॉट लाइक आई डिडंट ट्राई, आई ट्राइड, आई रियली वांटेड टू आल्सो, बट दिस इज नॉट हैपनिंग. मे बी लेट मी ट्राई समथिंग एल्स एंड व्हाट इफ दैट वर्क्स आउट फॉर मी. एंड then we started XD, and XD meant like I saw so many things that I could actually provide value. Yes, if I do this, then things could get better. Absolutely. If I do this, then things could better. So
इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा Absolutely, वो आ absolutely. जाता है. But I think everyone and anyone should stay open to all Correct. possibilities. And the best, like your parents agreed to you starting this. Did they? Yes. So that's the biggest thing. Yes, my parents have touchwood luckily been very very supportive. I had a failed startup also before this. Lack of execution बोल लो, bad timing बोल लो, but it was in the Web3 crypto space. I've spoken about it before also in one of my podcasts. But it was a failed startup. Bad execution, wrong execution and bad timing also. Like when we started the project, the entire Web3 space doomed, crashed, and that is when our project was starting. So timing is also something to blame, but execution majorly to be blamed. उसके बाद I started XT. So my parents to have the faith in me all over again. Yeah. That was a bigger thing, and that I can't forget. I can't stop respecting that. Yeah. And nobody would. एक बार देख लो कि भाई एक बार ये फेल कर चुके हैं, सेकंड टाइम नहीं भाई तुम घर पे ही ज्वाइन कर लो, वापस इतना पैसा नहीं है लगाने के लिए. Second time they reinvested all the time, efforts, faith, money, everything, and then helped me grow XD. Absolutely. Till date, मैं कोई भी बड़ा स्टेप XD में लेने जा रहा हूँ, I consult my dad before. भले I am the founder, whatever, but I consult my dad before taking a big step in XD. Yeah. Like because I know because of them is where I am today. Because of them, that they constantly showed faith in me. कि आज मेरा courage भी बना रहा. आज वरना आपको पहले बार ही negativity मिल जाती है ना, तो बहुत difficult होता है for a kid also to get the courage back. कि yes I can maybe do it. नहीं तो आपका mindset हो जाता है नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, एक बार fail हो गया. But चलो touch wood, luckily in my parents' case and in my case we took the positive side out of it. कि we learned so much from the last startup. We know what we want to do, we know what we definitely don't want to do, and that we executed in our new project, and touch wood it's working pretty well for us now. So yeah, parents are your biggest supporters I feel. General, कैसे roughly, what do your parents feel about you today? Like seeing the last 5 years, I'm sure they're very very proud, and even if you hadn't done all this, they would have still been proud of you. But still, आज उनका क्या thinking है आपके बारे में? My mom has given me a target कि 21 तक make $1 billion company, and she wants like a bungalow in Dubai. मतलब मैं materialism से उठ गया, but उनको materialism के बहुत शौक है. She wants a bungalow in Dubai. She wants a Mercedes S-Class. ये सब list दे के मुझे रखी है. ये सब खरीद लेना और मुझे दे देना, बस ऐसा बोला. ठीक है. And I respect my mom's targets a lot. Like she said, ये करना है तो बस ये करना है. So that's there, and dad's like never still doesn't appreciate कि एक level का कुछ किया. He says कि जब तक तू 100 करोड़ बच्चे नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं hunger die नहीं होनी चाहिए. हाँ तब तक I don't believe that it's like worth anything. So for him, I am still a normal child, like who's living a normal life. It's very focused कि हाँ जब तक तू 100 करोड़ बच्चे नहीं पहुँचेगा तब तक. And for him, इसकी Forbes में top 10 में उनका नाम होना चाहिए. Right. So that's the target I've gotten from him. So एक उनका target है, एक mom का target है, बस ये दोनों targets complete करने हैं उनके. हो जाएंगे बिल्कुल हाँ, होंगे यार. मेरा 100 करोड़ daily लेने का target है. होंगे बिल्कुल होंगे यार, बिल्कुल definitely होंगे. Let's talk about OLL 5 years from now. आज से 5 साल बाद, where do you see OLL? What is the places that you feel OLL would have captured or gotten stable? कि हाँ हमने 5 साल में हमको ये तो करना ही है OLL के साथ, और कुछ हो ही नहीं हुआ है. This is the base that we have to crack. Same, what I said before, like B2C, B2G, and B2B. B2B will get vertically expanded across India. India is such a market now कि आपको customer लाने के लिए बहुत अच्छे से convince करना पड़ेगा, because every penny is worth a lot. Definitely. Outside India, whatever you give returning in rupees, you're getting in dollars. Same into 80 rupees. मतलब आप समझो $1 उधर ₹1 है. So then the level of convincing power is not so much. Obviously you have to provide great quality, great execution, etc. But इतना level का initial acquisition नहीं करना. सही बात है. प्लस आपके पास यू विल हैव समथिंग टू शो आल्सो कि जो आप लोगों ने इंडिया में क्रिएट कर दिया है वही आपको बाहर जाके रेप्लिकेट करना रहेगा. सो द कन्वर्सिंग इज इजीियर. या वेरी easier. And the best part is अगर आप इंडिया में कस्टमर बना सकते हो तो आप दुनिया में कहीं भी कस्टमर बना सकते हो. So that's the biggest game. And that's the biggest game for startups also. So once you have cracked
tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 of India. Then you can go international. Tier 4 तक पहुँचे ना बस, तो आप international किसी भी country में कुछ भी बेचो, you are the best. सेलिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, दैट तो आई एग्री. जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था, इंडियंस डोंट लाइक टू स्पेंड मनी. लाइक दे विल स्पेंड मनी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट्स. Like they will have to see the value, they will have to see, okay, what is out of the box that I'm actually paying for it. Correct. Otherwise, Indians को पैसा भरवाना तो बहुत difficult है. Indians love their money. Absolutely. And the good part is after iPhone becoming a normal, पहले क्या था, iPhone was a luxury brand. If you have an iPhone, you're like a really cool Grade above, yeah. So now iPhone is normal, which means India का paying capacity increase. People are looking for more product quality. So I'm not saying to reduce your quality to sell to it. Yeah. I'm not saying to reduce your price to sell to it. But make sure that you sell the right. Something good. Yeah, मतलब value addition बस. मिलने वाला. और इंडिया में आपके sales है. Hmm. So if you're not getting sales, if your price is like extra high, sales नहीं आ रहे, product is not so good. ठीक है? Means it's not solving a problem. किसी का problem नहीं. और अगर आपका price भी अच्छा है and your product is really good, solving a problem and you're getting sales in India, I mean you're doing it. यार at this age इतना clarity होना, something to learn from, genuinely. इतना clarity, इतना मतलब clear रहना है कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है, कोई doubts नहीं है. Very nice, very वैसे impressive. 4 बजे उठो. 4 बजे उठते हो आप रोज? Yeah. Wow. Most kids these days sleep by that time. Well, अब पिछले साल तक तो यार मैं भी वो टाइम पे सोता था. Until I had HD and everything started, मैं भी रात को 3-3, 4-4 बजे तो सोता था जब आप उठ रहे हो. Yeah. So 4 बजे उठो, take a pen and paper, write down your goals, write down your thoughts, जो भी है, जितना भी सोच लो बस लिखो. And then close that folder, put it back. 6 बजे से काम चालू. 7:50 I have to go drop my brother to school. I go for a swim 800 meters in a day, and then I come back to work till 9 p.m. So 9 p.m. So I don't have that much of a social life. कभी parties के लिए नहीं जाता. शादी में first शादी I've gone was like last week in the entire 5 years. First शादी I went for. Okay. Why is that? But why is? पहला शादी है family. नहीं मतलब why are you not so social? I don't like to. Okay. मतलब it doesn't make sense. I go for all business events. I go for networking events. I go to wherever school के conferences हो रहे हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ. Wherever I see ROI में चले सही जाता बात हूँ. है. ROI नहीं है तो obviously there is one level of connections, like दोस्तों के साथ आगे जाके दोस्त कुछ भी बन सकता सही बात है. सही बात. But that should not be monetary first. That should be more of a friend. ये खाली कोई रिलेशन, उसके मतलब कोई बिहाइंड रीजन नहीं होना चाहिए इसके. मेरे alternate 3 reason बेस्ट नहीं. फ्रेंड्स हैं, 2 उसमें से IIT में हैं और एक जन इधर पढ़ रहा है. बट like the people I chose are also so like distinct, the supporters are like कि हाँ भाई तू काम कर, तेरे को इतना like पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा. उनको भी पार्टी में इंटरेस्ट. To have the right set of friends also who are constantly pushing you forward rather Yeah. than being a crab and pulling you back into the same Yeah, life, that's same the very basic. That is also very important, I feel. But यार श्रेयान, चलो इतना आप सीरियस हो, इतना आप पार्टी नहीं करते, बट स्टिल खुद को चिल रखने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए, व्हाट इज योर हॉबी? लाइक व्हाट इज योर थिंग टू डू कि यार मेरे को और कुछ काम नहीं करना है, मेरे को चिल करना है, मेरे को रिलैक्स करना है, आई वांट टू swim. It's very like बहुत ही clarity. मतलब when I swim in the morning, I know how my day is going to be because of my swim. So if I swim energetically, I swim well, I swim confidently. Swimming में हर एक stroke builds your confidence. However you swim. So swimming is the key for people. Nice. Interesting. Good way to look at it also. Yeah. Every stroke builds your confidence. Good way to look at it also. But again, see, now everyone, people the younger age, who are going to schools also, who are going to colleges also, who are constantly, stuck between classes, everyday curriculum, and thoda bahut social life also with friends. Of course, in that age, that is also required. आपको क्या लगता है कि to build a certain career, general, just to build a certain lifestyle or a certain career after schooling, what are those few things that you need to do right from then and there? Like एक थोड़े qualities होते हैं जो आप अभी से सीखना चालू कर दो. It will help you after school. जैसे होता है ना personality development बोल लो. So
I learned art very well when I was in school. So मैं art classes बहुत ज़्यादा था. So my favorite thing was art. मतलब मुझे art बहुत ज़्यादा पसंद. Which I sold my paintings also. So today that's helping me out in every poster design, every creative that goes out of my company. एक एक negative भी है कि I'm the best at this, so I want it to be the best quality. So I have to hire people. मतलब You are मेरे able to align with your mindset. yeah, मतलब when I'm hiring a designer, the level of expectation is higher than me. Yeah. So that's how when I'm hiring a designer. So art मैंने बहुत अच्छे से सीखा. फिर जब स्कूल में था तब I used to go for chess classes. So all these classes really helped me out today because I'm not that good in chess. I'm not so good in art, but like I was like really like I used to love chess also. तो मतलब आज जितने भी बिजनेस डिसीजन बनते हैं एक वो 3 मूव आगे का सोच के बनता है कि हाँ अगर ये खेला तो फिर ये होएगा ये होएगा ये होएगा. तो वो एक लेवल ऑफ बहुत अच्छा important judgment क्लियर हो जाता है with chess. Very good. That is also very good. And taking classes of public speaking, singing, dance, these help you in your Confidence. confidence building. कि जब मैं कोई स्टेज पे जाके बात करूँ, आज वो सिंगिंग क्लास मुझे याद आता है क्योंकि वो वहाँ पे मुझे सारे गमा पा किया गाना पूछा. मैं also in front of कोई बॉय नहीं जाता था सिंगिंग क्लास में, 4 लड़कियाँ जाती थी. तो उनके सामने सारे गमा पा गा तो बहुत Awkward लगता था. हाँ हाँ. so there you know that confidence got built up. हाँ ये से. So these classes build your life skills. Yes. That's why we also teach Correct. these And skills. these classes actually build life skills, not those the targeted skill that you are learning, going to learn. उससे ज़्यादा Hard much skills are less. there and soft Soft skills are also So these soft skills are built through class. Correct. Definitely. Very true. And these classes, like to each its own, but they should actually go to learn something more than the targeted Absolutely. hard skill also. And when before coding was a thing, I learnt it when I was in 4th grade coding. So that time, not many people learned coding at the age of 10. And I think maybe I was the first few kids who were learning coding. Baki sab, it was not the trend Definitely. 2010. So that is when things got really clicking for me because logic gets clear. If else get clear, loops get clear. तो एक हाँ भाई कुछ requirement आ रहा है ये सही नहीं ये सही है. Clear clarity of thought is coming to. It's like holistic development in the younger years are very. And that only happens when you keep on doing something. Yeah. Either you are failing at it or you are succeeding at it. That is fine. But even if you are failing at it, you are getting a better understanding of Absolutely. things. Do as many classes as you can. That helps you out a lot. पेरेंट्स ये ना कि बच्चे को बर्डन नहीं करना है, ये बर्डन नहीं करोगे तो फोर्टनाइट खेलेगा, यूट्यूब देखेगा और क्या. आप उसको ट्यूशन में भेजोगे वो गलत है. आयल से ऊपर से जाके कि भाई ट्यूशन मत भेजो. आप स्कूल में भेज रहे हो, 5 लाख रुपए फीस दे रहे हो, उसके बाद 5 लाख रुपए ऊपर से ट्यूशन का दे रहे हो. स्कूल मत भेजो या फिर ट्यूशन मत भेजो. एक डिसाइड सही बात है. होना तो एक्चुअली एक ही चाहिए, बट ट्रेडिशन बन गया दोनों होने का. नहीं, दोनों ही नहीं करना चाहिए. होने तो टाइम चाहिए. वेस्ट है भाई, पढ़ाई क्यों कर रहा है. करेक्ट. बट अगर वही बात है, आप पढ़ाई अगर सही तरीके से करवा दो तो आपको क्लासेस का जरूरत ही नहीं है. वही बात है. वेरी ट्रू. So these few things are my core belief में मतलब मैं ये गलत है तो गलत है. Schools are improving. Schools are changing. They are starting the mindset. Principals, like a principal is on an advisory board. We have principals who support us because they believe in the vision of skills and they believe in the vision of practical learning. And they believe that a change is required. If India needs to grow, then the education system needs to change a little bit. Maybe नहीं, 100% it needs to Yeah, I be. don't want to say that. किसी को कैसा लगे, I don't want to say that. You can definitely say that. नहीं, वो मेरे कस्टमर है फिर भी मैं कह रहा हूँ. Correct, fair. तो like वो starting से ही जब change आ जाएगा, तो Absolutely. youngsters का growth ही एक certain way में होगा, which can definitely shape India's future a certain way. Correct. No, That's change why is we very really required. we really want to improve that entirely. And that will definitely happen with the things you have said, the beliefs that you hold, and the things you have already done. It is not far-fetched, I feel. Very nice. Very insightful, Shreya. But it was a great conversation, honestly. Like, मैंने बहुत कुछ सीखा आपके साथ.
आज बात करके, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस जो है उन लोग में तो कितना ही वो लोग आपसे इंस्पायर हुए रहेंगे, एंड नहीं, सब definitely. सारे ऑडियंस यही सोच रहे रहेंगे कि यार ये अगर ये 19 साल का लड़का 15 साल पे स्टार्ट करके इतना सब कर सकता है, नो वन इज लेट, नो वन इज अर्ली, you just need to find the right thing to do at the right time, Absolutely. and there should be passion and love for what you are doing, otherwise मत करो. 100%. And the whole concept की entrepreneurial mindset young में चालू करना. Because what happens is in today's days, attention span is so less. Yes. That means what happens is अगर मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लगा मैं instantly swipe कर दूँगा या scroll कर दूँगा. So what happens if I'm running a company, instantly success नहीं मिला तो मैं next company पे बहुत जल्दी चले जाता हूँ या मैं next idea पे बहुत जल्दी चले जाता हूँ. That should not be the case. Even if that success isn't there or it's not prolonged for a long time, how do you continue that? This is going to be a 4th year in my life. तो fourth year में 10-15 दिन में 4th year होने वाला. 4 साल on one single thing, one single idea. एक दिन सक्सेस हुआ ठीक है, बाकी 100 दिन फेलियर हुए वो कोई देखता ही नहीं, वो एक दिन सक्सेस ही सब कोई देखता. सही बात. So you have to continue. Whatever you see me today is 10 days of success, 1,000 days of failure. Okay. But persistence is But required. persistence is very important, and your family support is very important. Very. These two things are very very मतलब and ये बहुत टाइम like I used to quit on small things when I was small. Like कोई गेम नहीं जीत रहा हूँ तो मैं quit कर देता था. So this my dad told me that this is a very bad habit. I have to get over this. When I got over that over time, now I don't quit on a thing very easily. Once I've taken it, I don't quit. Yes, you should definitely stay a little consistent and persistent towards whatever you are doing. चाहे success नहीं मिल रहा ठीक है, pivot करो, but success था. सही बात. That's how I do. सही बात है. But see, there are just one small thing to add on it. There are two segments to look at it. Okay, one is you love something to do. You are extremely passionate about doing this, yet you are not finding success. So you should stick on doing that. Stick with it. Do whatever you can. Pivot मारो, कुछ करो. Find the success because you are so passionate and like you are completely into it. Coming down to another set of audience who don't know what they want to do in life as of now. Younger generation only. कॉलेज में है, स्कूल में है, कॉलेज से जस्ट निकले हैं, हमको आइडिया ही नहीं हमको क्या करना है. बेस्ट पार्ट है कि यू आर सो यंग दैट यू कैन कीप चेंजिंग थिंग्स. ओवर देयर यू शुड चेंज थिंग्स. आई फील कि आपने एक सेगमेंट समझो मार्केटिंग पकड़ा, 3 महीना मार्केटिंग में काम किए, आपने समझा मार्केटिंग इज नॉट माई जॉब. फिर आप 3 महीना जाओ एक्विजिशन में, आपने बोला वो एक्विजिशन इज आल्सो नॉट माय थिंग. फिर आप 3 महीना जाओ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, वो आई एम अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट गाय, आई कैन स्ट्रेटेजाइज हाउ द प्रोडक्ट कैन बी अहेड, व्हाट द ब्रांड का पोजीशनिंग शुड बी आगे जाके. दैट इज माय थिंग. सो दैट इज वेयर द यंगर जनरेशंस कैन ट्राई एंड टेस्ट आल्सो व्हाट दे वांट टू डू with themselves, and once they have chosen कि okay this is what I want to do, now stay persistent and become number one. Yes. मतलब अगर आप खेल रहे हो तो number one ही yes मतलब very क्यों खेल. सही बात है. खेल के मतलब ही क्या है. very insightful conversation है श्रेया. बहुत मजा But आया. I'm really like glad that you have started this step. मतलब usually 23 years old that I know, I'm not so interested in. but एक बार 23 year के हो गए till 15 तो I'm still young. I have an open thought. When I'm 23, things start piling up. अब pressures ज़्यादा बढ़ जाते हैं. जो pressure cooker होता है वो ज़्यादा fire होता है. फिर भी you're open to start something new. yes And you're open to learn. That's a very big. क्योंकि प्रेशर में आके किसी के लिए भी, खाली मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ. अगर मेरे पे आज प्रेशर आ गया तो क्या मैं कल कुछ अच्छा काम कर पाऊंगा? ओवर प्रेशर, लिटिल प्रेशर इज गुड, इट कीप्स यू इन डिसिप्लिन, इट कीप्स यू इन पाथ, दैट इज फाइन. बट किसी ने अगर मेरे पे भी ओवर प्रेशर डाल दिया, एंड टचवुड माय पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट मोर देन बेटर देन मी. ओके, सो अगर आज मैं आप पे प्रेशर डालता हूँ कि नहीं आपको ये करना ही है, ऐसे ही करना है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, will you be able to do what you actually want to with OLL? With that extra pressure, you won't be able to. But वही जब आपको आपका वो स्पेस मिल जाता है, वो करेज मिल जाता है, वो फेथ मिल जाता है, now you can actually take that risk, you can try new things, you can try things that you want to do, right? That faith my parents had in me. Luckily मेरे को खुद पे तो वो करेज था ही कि भाई कोई बात नहीं, एक गलती हो गई, वो सीख लिया वहाँ से, अब उसको हम बेटर कर सकते हैं, बिकॉज 1 साल वेस्ट हुआ है.
अभी तो कितने साल बचे हैं, वो एक साल के चक्कर में मैं बाकी सारे सालों को वेस्ट तो नहीं कर सकता। एक साल में सीख लिया, जितना सीखना था बेटर कर लो। बट आई वाज वेरी लकी कि माय पेरेंट्स डिड नॉट पुट दैट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन मी कि भाई एक बार गलती कर दिया वापस गलती करने नहीं देंगे। नहीं, वो लोग समझे कि एक बार गलती से सीखा है तो सेकंड टाइम में गलती नहीं करेगा, या प्रोबेबली गलती होगी तो थोड़ी कम गलती होगी, सीखेगा, व्हाटएवर इट इज इट विल बी बेटर देन बिफोर, एंड दैट इज व्हाट एवरीवन शुड बिलीव इन कि एक बार 100% गलती हुई, नेक्स्ट टाइम 50% पे लाओ, थर्ड टाइम 25 पे लाओ, फोर्थ टाइम 0 पे आ ही जाएगा। नॉट नेसेसरली फोर्थ टाइम हो, जरूरी नहीं है कि फोर्थ टाइम लगे आपको, हो सकता है आपका सेकंड टाइम पे या कंप्लीटली ऑल गुड भी हो गए हो। बट गिव योरसेल्फ दैट स्पेस, डोंट कंस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि भाई नहीं हो पाएगा, या नेगेटिव मत रहो। हाँ बोलेगा, सब होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, स्टे विद दैट एटीट्यूड, एंड आई थिंक देयर इज नो प्रेशर टू टेक अदर देन योरसेल्फ। टेक योर ओन प्रेशर। आई तो फील खुद को लगना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। आज जैसे मैं आपके साथ बात किया, अरे मेरे को लग रहा है ऐसे थोड़ा कि यार इन्होंने इतने साल पहले चालू कर दिया, आई एम प्रीटी लेट इन व्हाट आई हैव टू डू, नाउ आई विल जस्ट गेट बेटर, नाउ आई pick some more pace, I'll get inspired, already gotten so inspired by our conversation, so that pressure should be there, but वो खुद पे होना चाहिए, external pressure मत लो, किसी का external pressure मत लो, क्योंकि उसके साथ डील आपको करना है और वो प्रेशर के बाद चीजें भी एग्जीक्यूट आपको करनी है। 100%। सो लाइक एक्सटर्नल प्रेशर तो लो मत, खुद का प्रेशर लो, खुद के लिए जो भी बोलो, आप उसको गोल्स बोल लो या पॉइंट्स बोल लो कि हमको ये पॉइंट तक तो पहुंचना ही है, हमको ये माइलस्टोन तक तो पहुंचना ही है, वो आप खुद के लिए रख लो डिसिप्लिन में रखने के लिए, बट प्रेशर तो लेना ही नहीं चाहिए। डेफिनेटली। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, चलो, ग्रेट टॉक। लाइक